Okay, good afternoon, teachers. I welcome you all to the second meeting for video editing. Today, we are going to see a new video editing app that is OpenShot. I hope I'm audible to all of you. Yes, Shubhala ma'am. I have one concern. Sonali here. Yes, Ma'am, ma'am. one more meeting is scheduled. Which one we have to attend? Which meeting is Sandeep scheduled? sir is there? Right Sonali now ma'am, which the other meeting you're talking about? yes sir. Which other meeting you're talking about? मैम कौन सी दूसरी मीटिंग Sir, है? it is on the which group? I'll let you know. Uh, Shumala ma'am, you can continue ma'am. Okay, so today we are going to start with OpenShot. The very first thing I'm going to tell you how you're supposed to download it and from where. So you can open your browser, any browser that you want, and in the search bar you can just write download OpenShot video editor. As soon as you type this and you click on the search button, it will leave you on this page. You can directly click on the very first link, this one, and over here you can see the download button. Accordingly, when you click on the download button, it will be downloaded here on the left side of your screen. It will not take much time, teachers. ये आपका बहुत time नहीं लेगा, बहुत जल्दी ही download हो जाएगा. Now I've already downloaded it in my laptop, but still we'll just wait for a few seconds so that it gets downloaded. After it is downloaded, you just have to open your this PC or my computer. Just a minute, we'll just let it get downloaded first. And yes, teachers, you can download this even while we are doing this. It will be taking only few seconds, like right now. It is done. You can just open your this PC or my computer. You can go in the downloaded folders. At the very top, you can see OpenShot over here. You can just double click. I have already installed it. You have to install it. So it is just going to ask you few simple questions like this. You have to give it a yes, and then after that it will give you few instructions like this. You have to click on yes, and then again it will ask you these questions. You have to click on I accept the agreement. Teachers, click on this. If you don't, it will not show you the next option. Again, click on this one, create a desktop icon. It is already ticked, but again, if it is not ticked in your laptop, so just once check if these three boxes are ticked in your laptop when you are downloading it. Click on next, and then you can click on install, and your OpenShot will be appearing on your desktop screen like this. So that is just a very small downloading process. You can open any browser. In the search bar, you can write download OpenShot video editor. The very first link, click on it, click on the download button, and then from this PC, you can just install the OpenShot app. Now, when you click on the OpenShot, when it opens up, this is how the interface looks. This is the interface for OpenShot. Now it is a little similar to video editor, like Microsoft Windows video editor. It is a little similar to that itself. For example, this is again the files area where you show or where you import all the project files that you need in your video. And over here you can preview your videos. आप जो भी video करने वाले हो, whatever editing you're going to do, you can watch it over here. Then same again, this is your timeline. Whatever files or images or videos or songs you have imported over here
in this place, in the project file place, you can drag them over here in the timeline from where you can make all the changes that you want. So this interface is similar to that of your Microsoft Windows video editor. Now, basic things are, the first basic thing is how to import the folders. Again, you can click on File button over here on the left side, top left side. Click on the Import Files button. Then wherever you have wherever you have saved the videos or the images or the songs that you will be needing for your video, click that folder, open that folder and select those files only. For example, in this file, I will be needing all the images and videos. So I'll just select all of them and I'll click on open. And as you can see, they have started, they are already imported in my interface. Now, how are you supposed to take these over here or bring these pictures or videos on the timeline? Simple, you can just click on them and drag them down here like this. Again, picture, click it, drag it down here like this. Very simple. आपको बस उन्हें click करना है, drag करना है, and you can just drag it down over here on this screen. Now, before doing this, this is the timeline. I would like to tell you something about the timeline. This is your timeline. You can scroll down. You have total of how many timeline? You have total of 5 timelines. Now, teachers, you can use as many timelines as you want. अगर आपको timeline increase करनी है तो आप ये add button पे भी click कर सकते हो. Here it is given add track. If you click on it, it will add track number 6 or timeline. Again click, it will add track number 7. Same way, अगर आपको delete करना है, you just have to do a right click and you have to click on remove track. The track will disappear. Again, click on it, remove track. It will disappear. So if you click on the add button, आप track add कर सकते हो. Track पर click कर right click करिए and click on remove track. आप track remove कर सकते हो. Now this button, the magnet button. Now teachers, carefully see, I'm just first showing you the basic things and then I'll show you how to add the effects, how to add music, everything. But first I'll just show you few basic things. Now teachers, over here, if you have these two pictures and there is a gap, okay? Now the gap is big so you can see it. If the gap is very small and you cannot see it, you can just click on this magnet button and what will happen is it will just join them. Just a minute. What is wrong? Just a minute, teachers. What is wrong? Oh, it is properly going on. What is wrong with it? Okay, I'll show you one more method if it is not working. This is the zoom in and zoom out buttons. This plus and this minus is the zoom in and zoom out button. If you want to see कि अगर आपके दो files के बीच में या दो videos के बीच में कोई भी space है तो आप इसे increase कर सकते हो जिससे आपको clearly दिखेगा. For example, now it is big so you can clearly see the difference. If I just decrease it like this, अगर मैंने इसे zoom out कर लिया है, so you can barely see it. आपको लग रहा है कि दोनों files एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा close है. That means there is no difference between them. So if ever you want to check if there is a difference, you can then zoom in and check if there is a difference. If there is, you can just move it and there will be no difference left between it. So you can also use take the help of the zoom in and zoom out button as so. Next is your razor tool, or you can say your split tool, as you want to. Same way, when you click on it, it will be working like this. It will appear on your screen as so, as in the form of a razor. आप इसे आपकी जो भी you can split. In short, you can split it. For example, I'll click over here. I have made
two parts of one image. Again, I will click. I have made 3 parts. Now teachers, before using it again, make sure you click on the razor tool. It goes away. Then you always have your hand over here, your mouse arrow. Then click on the middle part, click on delete, and then you can delete it. That was your split tool. In OpenShot, it has a different name, that is the razor tool. Again, join both the parts. Now same thing for the video. If I take a video, I want to cut the middle part. मुझे वीडियो इतनी बड़ी नहीं चाहिए. I want the middle part of the video. Again, I'll click on the razor tool. I'll check which part of the video do I not want. If I don't want this part, I'll click over here. I have 2 videos. Again, I'll take it forward to check till which part do I don't want it. I don't want it till here. I'll again check it and then I'll cut it. Now again I have 3 parts. I want to delete the middle part. I'll click on the razor tool, it will go away. I'll come here, click on this video, right click. Either I'll click on remove clip or you can use the delete button on your keyboard. And very simple, you can just join these 2 videos as so. So this was the razor tool for your image and for your video. Now teachers, let us start from the add title tool. Now, if I want to add the title tool, I will click over here on the very top on the add title. Click on the title button. Now, there are many options that are given to you over here. Select any one that you like. For example, I'll click on the cloud one. Now it is giving you few options. यहाँ पे आपको कुछ options देता है. You can write over here. Again, if you want to change the subtitle, you can write. Over here, you can change the font. आपको जो font चाहिए आप वो यहाँ से change कर सकते हो. There are many fonts over here. Then you can choose whatever size you want. And you can also change the text color as you want. आपको जो text color चाहिए आप वो change कर सकते हो. Same, there is a background color. Select any background color that you want. And then click on save. When you click on save, you can see an additional slide or a file here in your imported files. That is your title. You can select it, drag it, and take it on your timeline. Now teachers, if you want to add some things above a timeline, just make sure you can add any other tracks. आपको इसे बार-बार नीचे करने की ज़रूरत नहीं है. Okay? For example, now I'll add few of the videos. Just a minute, let me just decrease the size. And I'll take few of the pictures also. Now the very first thing that I'll show you, when you right click on your title, you get all these options. जब आप right click करते हो on the title slide, these are all the different options that you get of a title slide. So if you want to give it a fade in or fade out effect, अगर आपको इसको fade in या fade out effect देना है, you can click on the fade option. Then you decide where do you want it. Do you want the fade effect through the entire slide? If you want it in the starting, if you want it at the end. So if I want it to be in the starting, I'll click on the starting and I'll click fade in slow or I'll click fade in fast. And then again, if I want to change it or do some other effects, again I'll click on it, right click, animate.
Over here also you get three options: start of the clip, end of the clip, entire clip. Now if you do it on the start of the clip, teachers, it means कि जो भी इफेक्ट आप या जो भी एनिमेशन आप दे रहे हो वो बस उसके स्टार्टिंग में ही रहेगा. अगर आपने एंड ऑफ द क्लिप दिया तो जो भी एनिमेशन आप दोगे वो उसके एंड पर ही रहेगा या एंड पर ही आएगा. अगर आप एंटायर क्लिप दे रहे हो तो दैट मीन्स जो भी एनिमेशन आप करोगे, सेंटर टू एज टू एज, वॉट एवर यू वॉन्ट, दैट विल कम थ्रू द एंटायर क्लिप. पूरा क्लिप जब तक प्ले होगा तब तक ये पूरा एनिमेशन रहेगा. सो यू हैव टू डिसाइड वेयर डू यू वांट इट. If you want it at the end of the clip, at the start, or for the entire clip. And these three options will appear for almost every effect that you want. Okay, जो effect के ऊपर it is in the starting, beginning and end or the entire video, these three options will come and you have to choose according to your needs. For example, I put it at the end of the clip and I take any random one. So if I have selected random, so वो यहाँ पे random आएगा. It is not any random zoom in that will come out. It can come from the left, right, from anywhere because I have selected random. Then again the rotate. Over here you have rotations over here. Whichever rotations you want you can. Okay, depending on your needs. आपकी जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको जो rotation चाहिए आप वो click कर सकते हो. Then layouts. I don't think that the title slide needs layout, but time you can. It depends on you. There below layer there is a time option. You can select what time you want. You want normal, fast. Even in fast we have forward, 20x, 4x, 8x, 16x. Depends कि आप उसको कितने जल्दी move करना चाहते हो. और slow. Again forward and backward. We have both. Or you want it to freeze. You want the screen to be freezed for how many seconds? Accordingly you can select those and you can move forward. For example, I select it to be freezed for 2 seconds. So it will be freezed for 2 seconds at least. Then you have volume. Now if there is a particular volume that you have given only for this title, then आप उसका volume यहाँ से भी set कर सकते हो. And teachers, again, as we have seen in video editor, every slide when you click on them, when you do a right click, they all will have a few different options based on the type. अगर आप वीडियो सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको कुछ और मिलेंगे यहाँ पर. ओके, इफ यू गो इन द प्रॉपर्टीज फॉर द वॉल्यूम्स, एवरीथिंग, यू विल फाइंड अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन देम. Now we are done with the title. Now we can go to the video. The very first thing is, in video you can also add the fade effect. Now I want to add a fade effect in this video at the end. I'll click at end of the click and I'll click fade out fast. Same, I can click on animate, start, and I'll click on zoom in 50%. You can click on all the options and check कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है according to your needs. It is not necessary कि आपको बस एक ही ऑप्शन चूज करना है. You can select every option one by one, check it कि वो किस तरह से दिखाई देते हैं, and then you can also select another option based on your requirements. Then again rotate, layout and time. Now teachers, somewhere in the videos you require time. अगर आपको वीडियो बहुत फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए तो आप उसके हिसाब से इसका टाइम फास्ट भी रख सकते हो और स्लो भी रख सकते हो. If I want it slow, I'll click on slow and over here as you want. Then the next important thing, for example, I have two videos. Okay, now I don't want the audios of these two videos. मुझे ये दो वीडियो का ऑडियो नहीं चाहिए. I have my own audio. I want to add that. Now how to remove the audios of these two videos? Right click, separate audio, single click. Below it you will see the audio file over here like this. आपको बस क्लिक करना है, remove click and the audio will be gone. Same with the second video. Right click,
separate audio, single clip, the audio file has appeared below it. Just click on it, right click and remove clip. So the audio from both the videos have disappeared. For example, over here, see, there will be no audio for it now. And as you can see, we have done the settings of slow, and the video is playing a little slow accordingly. And there is no audio. Now this is my audio file. I'll just take it here and put it below. And you can see it is a video. So what will I do? If it is a video in the background, again, अगर आपकी audio file में भी एक video है, आप उसे फिर से separate audio कर सकते हो. Very simple. Separate audio करिए. You will get a audio file below. Now, instead of audio file, just delete the video file. Click on this video file. Right click. Remove clip. The video is not here. Once again, sometimes it happens that we select an audio file that has a video in it. So it is very simple. आप यहाँ पे audio file डाल दीजिए. Right click, separate audio, single clip. आपको नीचे audio file तो मिल जाएगी. Now you don't need the video. So just delete the video. Right click, remove clip. आपके पास audio file है. Just drag the audio file on the upper track, that is track number 3. And that will play accordingly through your entire video. Now, if you think the voice or the volume of the audio is very high, right click, go on volume. Again, you have 3 options. If you click on start of the clip, तो ये जो volume है, जितना भी level आप choose करोगे, that will only stay to the start of the clip. Same, अगर आप end पर click करोगे, तो जो भी volume आप select करोगे, वो सिर्फ end of the clip पर ही रहेगा. Now, I want to select the entire clip. मुझे entire clip का volume बस 40 या 50% चाहिए as a plain background music. I'll click on entire clip and I'll just click on level 40. Again, अगर आपको लगता है ये बहुत ज़्यादा है, you can right click, volume, entire clip and just click on 20. So this is how you can add a background voice, or sorry, background audio. आपको उसका भी अगर वॉल्यूम ऊपर नीचे कम करना है तो आप वो भी कर सकते हो. Now the next part is animation or effects or transitions. Now here is your, I'll just add 2-3 more files over here. Now teachers, if you want to add any kind of animation or transition, you can see the word over here, transition. आपको बस इस पर क्लिक करना है. And then there are many transitions that are given over here. You can just select any transition. For example, if I select this one, I'll take it and I'll drag it here on the top of my video. Now teachers, see, when you're dragging this transition, make sure कि आप इसे बहुत अच्छे से at the starting of the video ही रखें. Okay, because you can keep this transition here also, in the middle of the video. And what will happen when you keep this in the middle of the video, I'll show you right now. It will not play here at the starting. As you can see, it is playing in between. Now we need transitions at the very starting of the videos or images. So make sure that whenever you are dragging a transition, जब भी आप एक transition को drag कर रहे हो, आप उसे अच्छे से starting में रखिए like this. Whenever you're keeping it in the starting, you can see this blue line. That will be your indication that okay, the video is starting over there and our transition is right over there. It is not very difficult. You can try it once and you will get the hang of it. And now, when you select this transition,
you can either lower its size कि आपको कब तक चाहिए कि ट्रांजिशन कितना प्ले हो. If I want it to be very short and sweet, मैं उसका साइज छोटा कर दूंगी like this. Or else if I want it to be very big, I'll just drag it here like this. बट टीचर्स व्हाट इज डिसएडवांटेज कि अगर आप उसको इतना ड्रैग करोगे आपके वीडियो पे तो आपकी आधी वीडियो दिखाई नहीं देगी. So for a solution, just to give a very nice effect, make it short like this over here, so that just when you are going from one video to another video, you can just see a small transition that okay, we are going from one video to the another video. And also your entire video will not be covered through the transition as so. So this is how you should keep your transition short so that you can see your entire video. Now same way, how to take a transition for your images. Now teachers, whenever you are doing your transitions, you can click on zoom in तो आपको ठीक से दिख सके कि आप transition कहाँ पर लगा रहे हो और कहाँ पर रख रहे हो. Now if for zoom in, I click on this flower 9 transition or flower 8 transition, I'll just click on it and I'll drag it here on my video, image. Now you can see the entire, the transition is covering the entire image. So what you can do, you can select the transition and just decrease it like this. And when you play it, it will look like this. सो जस्ट मेक श्योर टीचर्स जब भी आप ट्रांजिशन दे रहे हो आपका ट्रांजिशन आप बहुत बड़ा मत रखिए, बिकॉज अगर आप बहुत बड़ा रखोगे तो द ट्रांजिशन टू कंप्लीट एंड देन योर वीडियो और द इमेज टू शो इट विल टेक टाइम. तो आपका आधा वीडियो या आधा इमेज ट्रांजिशन में ही ना चला जाए. सो मेक श्योर द साइज इज अ लिटिल स्मॉलर. एंड ऑल्सो देर आर मेनी ट्रांजिशंस. Okay, not every transition will look good with the images or the video. यहाँ पर बहुत सारे transitions है टीचर. हर एक transition आपकी वीडियो के साथ अच्छा नहीं लगेगा. They will look a lot blurry in the start. So just there are many normal also like this flower. They are very simple. They'll just turn a circle. So you can select those, search for those transition that will not really mess up with the entire video. अगेन अगर आपको नेक्स्ट इमेज के लिए भी ट्रांजिशन लेना है, सिलेक्ट एनी वन, क्लिक ऑन द ट्रांजिशन, ड्रैग इट, प्लेस इट हियर. इफ इट इज अगेन कवरिंग द एंटायर इमेज, you can decrease the size like this. And same way आप आपके हर एक वीडियो या इमेज के ऊपर ट्रांजिशन रख सकते हो. And teacher, short request, you should do the transition after you have made the entire video. जब आपने ये पूरा वीडियोस एक के पीछे एक लाइन में लगा दिए हैं, when you know that you're not going to change it anymore, that is the time you start giving the transitions. Why? Because if for example I decided to change the size of this video, now what will happen is if I decided to change, okay, I took it over here up and I decided to change. मैंने इसका size थोड़ा कम कर दिया. I'll drag it back down. Now, if I want to move it here in the front, I selected the picture and can you see there is one more transition that has appeared on the screen, this one, and you have to click it. It is deleted. अब आपको दिख रहा है कि आपने जो पहले ट्रांजिशन दिया था वो आपके इमेज के साथ शिफ्ट नहीं हुआ है. So you have to drag it and again take it here on the beginning. Now again if I want to fill this gap, मैं ये इमेज को भी सामने पुल करूंगी. Again after this I have to take the transition of this image also. Now this looks easier because हमारे पास सिर्फ दो इमेज के ऊपर ट्रांजिशन था, बट आपके पास और बहुत सारी इमेजेस हो सकती है, उन सब पे आप ट्रांजिशन दोगे. सो इट इज बेटर टू डू और गिव ट्रांजिशन व्हेन यू हैव मेड योर एंटायर वीडियो, व्हेन यू नो फॉर श्योर कि अब आपको कोई भी कटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अदरवाइज यू विल ईदर हैव टू डिलीट ऑल दीज ट्रांजिशन एंड देन मूव देम फॉरवर्ड लाइक दिस,
or you have to move them forward and the transition along with them as so. So that is just a small suggestion कि आप सबसे पहले अपना पूरा वीडियो बना लीजिए, all the changes you want, cutting and splitting, you can do that, and after that you can add the transition at the very end. Same way, you can do right click, first select the slide, right click, and you have animate also. You can do animation also at the beginning end for the entire clip. Now for the entire clip, if you're doing it on an image, I would suggest कि आप entire clip मत करिए. Do it on the starting because transition and animation look good at the beginning of the video or the image. So you can click on the start of the clip. You can click on zoom to center, center to top. So what will happen, the image will move from the center position to the top one. So you have to check again and again कि आपको कौन सा animation अच्छा लग रहा है, and accordingly you can select any animation that you want. Now coming to the last one, that is trim. Now teachers, one more thing, this is just a small example. You can also decrease the size of your video by trimming it over here. For example, select the video, it will turn red, and take your mouse pointer to the very end of the video. Now my mouse pointer has turned into a two-side facing white color arrow. You just have to drag it backwards. आपको जितना वीडियो चाहिए आप उसे ड्रैग कर सकते हो इस तरह से, और बस यहाँ तक जो वीडियो था वो प्ले हो जाएगा. If you don't want it, click on it and you can drag it back again like this. So this is just a normal thing. अगर आपको split करना है, so I have shown you with the help of the razor tool, you can select the middle part and delete the middle part. But अगर आपको बस end का part ही delete करना है थोड़ा सा, if you want to delete the end part, no need to use the razor tool. अगर आपको end का part delete करना है तो बस आप यहाँ पर click कर कर उसे थोड़ा सा drag करिए जहाँ तक आपको चाहिए. Same with the front part. अगर आपको starting का थोड़ा सा part नहीं चाहिए, for example there is a dance video, okay, and this child has taken 5 minutes pause in the very beginning and then started the dance. So you can just click the video, take it over here, and this थोड़ा सा आपको आगे कर देना है, and the 5-minute difference where she has not danced will be erased. So that is how you need to trim. एंड अगर आपको बीच का कुछ पार्ट डिलीट करना है या रिमूव करना है तो आपको रेजर टूल यूज करना होगा. So this was all the basics. I hope you have understood it, teachers. Now I think the one question that everyone wants to know is, अगर आपको दो वीडियोस एक साथ on the screen चाहिए, so how are you supposed to do it? Before going to that part, is there any other questions that the teachers would like to ask me, so that I can clear it out and then go to the last topic? Yes, teachers, is there Yes, any? ma'am. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Sharon here. Yes, ma'am. Yes, Sharon, ma'am. Yes, ma'am. I have tried using this application before also, and what I used to do is, while I'm separating the audio from the video, Yes. I decrease the volume of the audio. Yes, Like ma'am. I make it 0%. So is it okay? Does it affect the quality of the video? No, ma'am, it does not affect the quality of the video. Ma'am, for example, the option is given there. For example, if you're using a MC video, if a child is just introducing the things, okay? So at that time, what you can do, you can add it and आप उसका volume कम रख सकते हो. For example, this one. If over here there is a MC video and below here I just want to play a background sound, because like MC video के पीछे अगर there is no sound, it will look very dry. So instead for that option you can just click and the volume option is there. So अगर आपने वॉल्यूम 0 भी किया हो तो उससे वीडियो की क्वालिटी को या साउंड की क्वालिटी को इफेक्ट नहीं होता है. We just remove it to be on the safer side. If you are decreasing the volume to 0, even at that point आपको आवाज नहीं आएगी. So it does not really matter. Nothing will change. Thank you, ma'am. You're most welcome.
Any other questions, teachers, or should I go to the next topic? Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, what is this track 4, track 3, and track 5? Like, what does this indicate basically? मैम फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ इफ़ आई वॉन्ट फ्यू वीडियोज और लाइक दिस इफ़ आई वॉन्ट द वॉल्यूम आई नीड दिस ट्रैक्स ओवर हियर टू ऐड देम बिकॉज हम हर एक चीज़ एक ट्रैक पर नहीं रख सकते फॉर एग्जाम्पल दिस वॉल्यूम इफ़ आई ओनली हैव वन ट्रैक ओके आई नीड दिस एज अ बैकग्राउंड वॉइस तो मैं ये कहाँ पर डालूंगी मैं ये ट्रैक नंबर 4 के नीचे वाले ट्रैक पर डालूंगी now same ways over here I want on this picture sorry on this video preview I want two videos to be on the same screen side by side so what will I do I will drag this video and I'll put it over here on the top so इसलिए हम हमारे पास ट्रैक्स है ताकि हम एक लेयर के ऊपर दूसरा ऐड कर सकें एंड देन वी कैन go to properties we can do for few settings and then we will be able to see both the videos side by side that is the main use of track कि आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो आपके needs के हिसाब से I'll just show you ma'am in a minute and then you will be clear with why do we need these many tracks. श्योर मैम तो मैम बेसिकली अगर हमें केवल एक ट्रैक पे काम करना है तो हम किसी भी एक ट्रैक को चूज करके वी कैन वर्क अपॉन दैट राइट Yes, ma'am. Yes, you can. And if you, in case, Thank if you you so much. need any more track, welcome, ma'am. Teachers, yes, even if you need one more track. For example, now I don't have any track above 5. अगर मुझे एक और track ऊपर चाहिए, so I'll click on this track number 6 and I'll get it over here. If I want to drag it, I can also drag it down to the next one. So, teachers, any more questions? Okay, so now I'll show the next property. Okay, in this property, teachers, what will happen? Yes. इसमें एक maximum साथ Hello. hello, sorry to Yes. ma'am. Maximum how many tracks we can have on the screen? Sir, I think as many tracks as you want, because till now the maximum number of tracks I have used they were only 7. Apart from 7, I have not gone furthermore. उससे ज़्यादा आज तक ज़रूरत पड़ी नहीं है. Because I have added 4 videos in the same track, sorry, in the same profile. So I have used till track number 7. But is there any number to? Is there any limit? So we'll just wait, add 25 is the limit. So we can add Okay, till okay. track number 19. So I don't think there is a limit to there. As you can No, see, I because have why I'm asking you? Because if we are having the different kind of group singing के videos अगर हमें बनाने हैं, so we are yes. having yes number of students those who are singing, maybe the dancing things are there. So that's why I'm asking. Yes, sir. Sir, I just now added and I was able to add till 19 and even more. So I don't think there is any limit, any very less limit for the tracks. I think it has a very good limit. So you can add many tracks to one video. Okay, okay. Thank you, ma'am. You're most welcome, sir. Thank you. Any other questions? मैम इस वो जो अपन ट्रैक ऐड करते हैं तो उसके साथ उतने स्लाइड बढ़ते हैं क्या वीडियो के? नहीं मैम ये ट्रैक बस हम डालते हैं बिकॉज अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैम देखिए अब मैंने ये वीडियो के ऊपर ये वीडियो डाला है क्या आपको ये नीचे वाला वीडियो दिखाई दे रहा है दिस वन सी जस्ट अ मिनट अब आपको ये वीडियो दिख रहा है आपको इसके पीछे दिखाई दे रहा है कि मैंने एक और वीडियो डाला है तो ये ट्रैक्स बस हम जो इसमें डालना चाहते हैं उतने ही आएंगे उतने ही स्लाइड्स लेंगे वो ज़रूरी नहीं है मैम हम ट्रैक्स में जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं इवन इफ वी हैव एडेड एक्स्ट्रा ट्रैक्स उनमें भी हमें जो चाहिए हम वो ऐड कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि जितने स्लाइड्स यहाँ पे हैं उतने वहीं पे भी होंगे सो इट डिपेंड्स ऑन यू ओके मैम. एनी अदर क्वेश्चन टीचर्स
Okay, so I will start with this. Now, teachers, most of you sorry, that there should be two slides, two of your videos on the screen side by side. Now, for that, it is very simple. You just have to click on the video first, right click, properties, and on the left hand side, you will get this thing. Now teachers, the important four options for you over here are the location XY and the scale XY. These are the four important buttons or the important things for you, that is location, जिससे वो वीडियो को हम दिखा सकते हैं कि हमें उसे कहाँ पे चाहिए, and also the size, it will change the size. For example, I have clicked on this video. Now I will just drag this. This is a lighter gray color and this. I'll just click over here on location X and मैं उसे बस थोड़ा पीछे लूंगी. Now as you can see, वो पूरा साइड में हट चुका है. So this is how आप डिसाइड करोगे कि आपकी वीडियो का लोकेशन क्या होगा. If I select or make any changes with the Y location, it will move to the right side, top, like this. So इससे आप डिसाइड करोगे कि आपके वीडियो को कौन सी लोकेशन मिलेगी. Same with the X and Y scale. Click and the video will change its size like this. Okay, आपको जितना चाहिए आप उतना कर सकते हो as you want. So I'll keep it like this, a little smaller. Okay, ताकि मैं ये वीडियो को यहाँ पर रख सकूं. And then even with the scale Y, what will happen? The height will decrease. Okay, हमें height decrease करनी नहीं है, but still I'm just showing it to you as so. इसकी height भी decrease हो जाएगी, but यहाँ पर हमें इसकी height decrease नहीं करनी है, so we'll just keep it full like this. So teachers, these green colors that have been highlighted, these are important if you want two videos side by side or four videos. Okay, so today I'll show you how to do it for two videos. Very first, सबसे पहले आप scale X use करोगे. Okay, and then it will decrease like this, and then again आप scale X के through उसका side change करोगे as so. Understood? Now that this video is done, मुझे ये वीडियो भी साइड में चाहिए इसी एनिमल वीडियो की तरह. So again, click on the animal video. Teachers, again, before you are working on the video or slide, just make sure कि the slide is red. It is red means आपने वो slide select की है और आप वही slide पे work कर रहे हो. Okay, so now this slide is red. Right click, properties. This will open up. Same way, आपको फिर से location XY and scale XY की जरूरत पड़ेगी. Now again, हम उसका size छोटा करेंगे with the help of scale X as so. And then we can move the location over here like this. Now teachers, see, अगर आप location X को right side में बढ़ाते हो तो वो right side में ही जाएगा image. अगर आप लोकेशन X को लेफ्ट साइड में करते हो तो इमेज आपका वीडियो लेफ्ट साइड में चला जाएगा. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वीडियो कहाँ पर जाना चाहिए. मुझे वो राइट साइड पे चाहिए. क्लिक एंड डन. अब आपके दोनों वीडियोस एक ही स्क्रीन पे है. नाउ वी विल जस्ट प्ले देम एज सो. नाउ आई हैव नॉट removed the volume. I'll just decrease it. We'll only hear this background voice. This is how you get two videos on the same screen, by just clicking on them, going to the properties and making few changes in the location X and scale X. Okay teachers, so अगर आपको दो वीडियो, you can also write this down. If you want to get two videos on the same screen,
you have to make changes in two things, that is location X and scale X. Okay teachers, it is very simple, just take it as a hint. अगर आपको दो वीडियोस एक स्क्रीन पर चाहिए तो आपको चेंजेस करने होंगे लोकेशन X, स्केल X में, ओनली दीज टू, लोकेशन X एंड स्केल X. ओके नाउ अगर आप चाहते हो कि आप 4 वीडियो ऐड करो तो आप चेंजेस करोगे लोकेशन X, लोकेशन Y, scale X, scale Y in all these four. So just a small hint you can remember, you can write on a paper. If we want to put 2 videos on a screen, make changes in location X and scale Y. And again, if we want to make changes in 4 video or we want 4 videos on the screen, make changes in location X, location Y, scale X, scale Y. और इधर टेक अ स्क्रीनशॉट तो आपको याद रहे कि आपको कौन से 4 बटन्स के हेल्प से आप चेंजेस कर सकते हो. Now, teachers, is this clear to you so that I can go and show you how to make 4 videos, because some of you might need 4 videos. So, Excuse me, Sumala ma'am, one query. yes ma'am. Hello ma'am. Yes ma'am. अभी ये जो लड़की गा रही है उसके बैक साइड में हम मंदिर दिखा सकते हैं? मैम दिखा तो सकते हैं बट उसका बैकग्राउंड वो नहीं है मैम, वो आपको डायरेक्टली बहुत डिफिकल्ट एडिटिंग होता है. इस वीडियो के पीछे अगर हमें कोई टेम्पल दिखाना है तो वो हम कर सकते हैं क्या एडिट करके? मैम आप वो कर सकते हो बट ओनली अगर वीडियो के साइड में ब्लैंक होता तो. फॉर एग्जाम्पल इफ आई रिमूव दिस, ओके दे आर इन अ लो, अगर मैं वो वीडियो रखती हूँ यहाँ पर और इफ आई रिमूव देम व्हाट विल हैपन इज, जैसे मैंने ये वीडियो यहाँ पर लिया, जस्ट अ मिनट, सी मैम आपको आई गेस ये वीडियो दिख रहा है. यहाँ पे अगर आपको ये ब्लैंक कवर करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे कोई भी इमेज जो है मंदिर का आप लेकर इसके ऊपर डाल सकते हो इस तरह से. ओके बट आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो पूरा पीछे उसको सराउंड करे. ओके एंड अगेन आपको प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा लाइक दिस. बट मैम मेक श्योर कि लड़की का जो ये बैकग्राउंड है, ओके द बैकग्राउंड दैट शी हैज, द स्टेज, द नेम, दैट विल नॉट गो. मंदिर आपको बस ये ब्लैंक जगह पर ही दिखेगा जहां पे आपने वो रखा है. अगेन विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन चेंज इट. फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट चेंज इट ऑफ दिस, द वीडियो, सॉरी द इमेज. आप यहाँ से उसका डायरेक्शन ऐसे वगैरह चेंज कर सकते हो इफ इट इज अ बिग वन. अगर आप वो बड़ा है तो आप उसको वैसे कर सकते हो या फिर आपको इसको बड़ा करना पड़ेगा मैम. ओके बट आप इसे करोगे भी तो लड़की का जो बैकग्राउंड है आपको वही दिखाई देगा. ओके बिकॉज दिस इज, दैट इज जस्ट द बैकग्राउंड दैट द गर्ल हैज टेकन. सो आपको फिर से प्रॉपर्टीज में जाना होगा, लोकेशन एक्स, लोकेशन वाई, एंड आपको उसके पीछे वो दिख जाएगा. अगर इमेज बड़ा है मैम टेम्पल का तो वो तो डायरेक्टली ही दिख जाएगा. अगर बहुत बड़ा है, इफ इट इज सराउंडिंग द एंटायर थिंग लाइक दिस, सी अगर ऐसा है तो वो इमीडिएटली दिख ही जाएगा उस पे. यू जस्ट हैव टू पुट इट बिहाइंड और बिलो लाइक दिस ताकि वो उसके पीछे दिख सके इस तरह से. ओके तो बस उसके नीचे डालना होगा. अगर आपके पास टेम्पल का इमेज है तो ऐसे पीछे डालोगे तो यहाँ पे टेम्पल आ जाएगा. एंड आप इसका हाइट छोटा कर सकते हो वीडियो का ताकि वो टेम्पल दिख सके. लाइक गो हियर, स्केल वाई, जस्ट अ मिनट मैम, स्केल वाई थोड़ा सा छोटा करिए, सॉरी, बहुत नहीं, थोड़ा सा छोटा करिए ताकि आपको वो दिख सके, आपका जो भी टेम्पल है वो, लाइक दिस. मैंने बहुत थोड़ा छोटा किया है, आपको जितना करना है आप उतना कर सकते हो अगर आपको पीछे टेम्पल चाहिए तो. सो टीचर्स विथ 2 videos, this is how you're supposed to do it. Do you have any questions when you are doing it with 2 videos? And for images also like this only? Yes ma'am, for images also like this only. आपको images के भी राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज होती है अगेन सेम वे. आपको बस यही चारों ऑप्शंस में उनके अंदर चेंजेस करने होंगे. लोकेशन एक्स,
स्केल एक्स। अगर 4 हो तो लोकेशन एक्स, लोकेशन वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई। So any problem with this? Should I show it again? मैम 4 इमेजेस और बीच में एक वीडियो डालना है तो कैसे करेंगे? मैम सेम वे, अगर आपको डालना है, देखिए फॉर एग्जांपल मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, नाउ आई विल जस्ट पुट 2 इमेजेस आल्सो ओवर हियर। मैं इनके ऊपर डाल देती हूँ ताकि वो एक ही स्लाइड में आ सके, लाइक दिस। एंड देन मैं फिर से स्टार्ट करूंगी लास्ट वाले वीडियो से। इस पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, जस्ट अ मिनट मैम, प्रॉपर्टीज में जाना है एंड देन अब आपको चाहिए कि यहाँ पे एक इमेज आए, यहाँ पे एक इमेज, यहाँ वीडियो, यहाँ वीडियो। सेम वे अगेन आपको उनका लोकेशन वगैरह चेंज करना है। सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, आपको सबसे पहले उनका साइज चेंज करना होगा, लाइक दिस। वो जब बहुत छोटा हो जाता है तो आप उसका लोकेशन चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे थोड़ा सा नीचे करना चाहती हूँ, इस तरह से। नाउ डन। अब मैं ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक करूँगी, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। फिर से मैं इसका फिर से साइज थोड़ा सा छोटा कर दूंगी, इस तरह से। एंड अगेन मैं इसका थोड़ा सा नीचे करके इसे नीचे डाल दूंगी। अगर आप चाहते हो कि ये आपका वीडियो ऊपर आए तो आप इसे इस तरह से पीछे कर कर ऊपर भी डाल सकते हो, दैट वे। नाउ क्लिक ऑन दिस इमेज, प्रॉपर्टीज पर क्लिक करिए। अगेन आपको बस 4 बटन्स के साथ प्ले करना है, दैट इज लोकेशन एक्स, वाई, स्केल एक्स, स्केल वाई। नाउ टीचर्स, इफ बाय चांस आपको अब क्लास खत्म होने के बाद याद नहीं रहता है, सो यू कैन कीप ऑन प्लेइंग विद दीज 4 बटन्स with any random image, okay? So you will get a hang of things कि कौन से बटन से कहाँ पे जाता है। See for example like this, आपको समझ में आएगा कि ओके ये बटन से यहाँ जाता है, ये बटन से ऊपर नीचे जाता है, इस तरह से। ओके, ये बटन से उसका साइज छोटा बड़ा होता है। सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि आपको कौन से बटन से क्या करना है। Okay, now as we cannot see the other one, first we'll just make sure of this first image. Click on this button, click on properties, and again start playing with this. We'll just decrease the size and change its location here and at the bottom like this. अगर आपको लगता है साइज बहुत बड़ा हो रहा है, ओवरलैपिंग, अगेन गो टू द स्केल एंड डिक्रीज द साइज। सी, आप इसका विड्थ बढ़ा सकते हो और हाइट कम कर सकते हो। एंड देन अगेन गो टू द लोकेशन and you can adjust it as the way you want it to. Okay teachers, so these are the 4 buttons that you have to play with when you want to overlap things like this. Now this one, अब हमने इसका साइज तो छोटा कर दिया है, we want it here. Location means हमें इसे कहाँ पे डालना है, on the left side, sorry, and at the top, sorry, top, like this. Now teachers, it depends on you. अगर आपको इसका शेप लग रहा है कि बहुत ब्लैंक एरिया है, so you can add one more image, और आप डायरेक्टली स्केल में जाकर भी इसका विड्थ बढ़ा सकते हो, इस तरह से। जिस भी तरह से आपको बढ़ाना है उस तरह से आप इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, लाइक दिस। एंड देन जस्ट चेंज द पोजीशन। So this is how you can add 4 things or as many things as you want on the screen. The only thing is कि आपको इन सब को थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, because see as you can see it is rough. यहाँ पर बहुत सारा blank space दिख रहा है आपको. There is a black color over here, black color over here, over here.
जब आप एक नॉर्मल वीडियो बनाते हो, आपको ये ब्लैक साइंस नहीं चाहिए होते, तो आप इसे प्रॉपरली मेजर करके आप उसका लोकेशन और उसका स्केल बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो. दिस इज जस्ट अ ट्रेनिंग, सो आई डिड इट एज फास्ट एज आई कैन एंड इट विल अपीयर लाइक दिस. नाउ टीचर्स, मैंने आपको बस दो इमेजेस और दो वीडियोस के साथ बताया है. अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इनमें कितना भी, आपको जितने भी पिक्चर्स एक साथ डालने हैं, आप इनमें डाल सकते हो एज यू वांट इट टू बी. So it depends totally on you. The only thing you have to take care of is location X, location Y, scale X and scale Y. Rest everything is very easy. Only this thing is a little difficult. You can just always play with it and you will get a hang with it. So teachers, any other questions you have or any other questions based on this? Excuse me, ma'am. I have just tried it on my own, but I think that the image, the video is shifting. I want you to see. Shall I put on my camera? Yes, ma'am. Just a minute. Ma'am, I cannot see it. Yeah, I don't think you have. 1 minute, ma'am. Yes. Ma'am, can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, I'll just play the video. See, ma'am, it is shifting from one side to the other. मैम, आपने मेक श्योर किया था कि आपने स्टार्टिंग में ही ओके मैम, आई अंडरस्टूड व्हाट यू डिड. देयर इज जस्ट अ स्मॉल ग्लिच. यू आर डूइंग इट राइट मैम. टीचर्स, जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप ये कर रहे हो तो आपका ये जो पॉइंटर है ये इन द स्टार्टिंग रहे. बिकॉज व्हाट दिस पॉइंटर इंडिकेट्स इज कि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो, दिस विल बी सीन थ्रू द स्टार्ट. अगर आपका ये पॉइंटर यहाँ पे होगा anywhere in the middle and then you are going to make the changes in the properties and the location and the scale, so what will it happen? वो यहाँ तक वीडियो एक ही दिखाएगा जो सबसे बड़ा है, the one that is covering the entire screen. It will show that, and then जैसे हमने मैम का देखा, they start moving apart. From that point they will start moving apart. So what you have to do, you have to just make sure कि आपका ये pointer at the beginning रहे, so that it knows कि हमें ये यही places जो हमारी है ये हमें start से रखनी है. It will not shift. They will be on the place from the beginning. So you just have to place this pointer here at the start before doing anything to the properties or the location or the scale. Okay, ma'am. Ma'am, just try that once and I think the problem will be solved. Okay, ma'am. Thank you. You're welcome, ma'am. Any other question, teachers? मैम, ये जब हम करते हैं तो एक मिनट मैम. तो मैम ये एक साथ जुड़ने के बाद मीन्स सिंक्रो कैसे दिखेगा मैम? हर एक बच्चे का सिंक्रो कैसे दिखेगा? अगर 4 बच्चे सेम एक्शन कर रहे हैं और हमें एट ए टाइम दिखाना है सेम एक्शन, Yes, एक ही, तो वो सिंक्रो कैसे लाना है? मैम, सबसे पहले कल्याणी मैम, उसके लिए आपका ट्रैक पहले बात सिंक्रो होना चाहिए. आपके बच्चे जो गाना डांस कर रहे हैं या गा रहे हैं ना, वो एक ही ट्रैक पे होना चाहिए. आपका गाना कॉमन होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं हो पाएगा. अगर आपका Yes. अलग बीट बच्चे अलग अलग गा रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा मैम. उसके लिए आपका ट्रैक एक ही चाहिए. मतलब आपने बच्चों को एक ही सॉन्ग सब जगह पे देना चाहिए. फिर चाहे तो आप उसमें से कुछ कुछ आपको जो अच्छा लगे आप उठा सकते हो. मैम, सर मीन्स टू से, अगर ऐसे 4 समझ लीजिए मैम, यहाँ पर 4 बच्चे हैं. ओके. अब अगर सामने, अगर आप एक बच्चा आगे गा रहा है, एक बच्चा पीछे गा रहा है, एक स्लो गा रहा है, एक बहुत फास्ट गा रहा है, तो मैम वो तो हम चाह कर भी वीडियो में चेंज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो तो वो बच्चे की स्पीड है. अगर हम कोई बच्चा थोड़ा स्लो गा रहा है, हम उसे ट्राई कर सकते हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में जाकर उसका टाइम देखकर वी कैन क्लिक ऑन फास्ट. आप फास्ट फॉरवर्ड पे 2x पर जाकर देख सकते हो. अगर वो फास्ट होता है, सिंक होता है बाकी बच्चों के साथ, तो ठीक है. अगर कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल दिस फर्स्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये 3 बच्चे थोड़ा पहले गा रहे हैं, ये
थोड़ा बाद में। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो की तरह आपको बस यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करना है, थोड़ा सा वीडियो को ऐसे सामने से ट्रिम करना है। दैट मीन्स वो बच्चे का 5 मिनट जो वो पहले पॉज ले रहा था वो कट हो जाएगा, एंड दैट वे ये बच्चा भी इनके साथ सिंक में आएगा। सो मैम इट डिपेंड्स कि क्या आपके सब बच्चे सिंक में गा रहे हैं। हम यहाँ से पूरी कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा, हम थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं, थोड़ा स्पीड कम कर सकते हैं। अगर बच्चा स्टार्टिंग में 5 मिनट पॉज ले रहा है हम वो कम कर सकते हैं। बट मैम अगर बच्चे बिल्कुल ही सिंक में नहीं गा रहे या सिंक में डांस ही नहीं कर रहे, तो वो उनकी वीडियो में है, वो आप चाह के भी नहीं कर सकते। आपको बच्चे को न्यू वीडियो बनाने के लिए ही बोलना पड़ेगा, बिकॉज आप उसको कितना कट करोगे बीच में। सो दैट इज द थिंग्स दैट यू कैन डू। आप थोड़े चेंजेस कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो स्पीड, थोड़ा स्पीड कम कर कर देखिए। हो जाता है उन चीज़ों से तो वेरी वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होता है सो देन मैम वो बच्चे को वीडियो फिर से तो बनाकर देना ही पड़ेगा। मैम। एनी मोर क्वेश्चंस टीचर्स? मैम दोबारा कब लेंगे सेशन? Sir, I have few of the very advanced things that are left regarding OpenShot. So ये session होने के बाद फिर से will give you a small assignment, and then again in next week we'll have the session on Wednesday or whenever everyone is free, when you don't have any meeting or any webinars. सॉरी मैम, एक्चुअली क्या है, मुझे एक बार में सब समझ में नहीं आता, 2-3 बार रिपीट हो गया और थोड़ा 2-3 बार प्रैक्टिकल में किया तो जाके वो माइंड में सेट हो जाता है। हाँ डैडी Yes. सर वीडियो भेजा था ना लास्ट टाइम का, ये भी भेजेंगे ना? Yes sir, yes. अगर आपको वीडियो चाहिए इट इज ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, आई हैव सेंड द लिंक। हम ये वीडियो भी सर यूट्यूब पे डाल देंगे, सो आपको अगर फिर से देखना है तो आप वहां पर भी देख सकते हो। एंड विल ऑल्सो हैव वन मोर सेशन, सो इफ यू वांट ओके मी मैम। टू दिस अगेन वी विल डू दैट। प्लीज सेंड इट दैट लिंक मैम। Yes ma'am, yes, as soon as I upload it I'll share it in the group. ओके थैंक यू। Any other question teachers? I guess everyone understood this. So now teachers, on the very last two steps, over here also you can save this. Now teachers, before exporting it, I would seriously like you all to save this. You can click on the file options, you can click on save project. When you click on save project, give any name you want and the proper place. Click it over here and it will be saved. Now for example, if I by chance have exported it, अब मैं इसे export कर रही हूँ, you can again click on the file option, click on the export option, export, select where you want to save it. If you want it on the document desktop, save it, and this write the proper name, that is trial video, and click on export. It will export over here. Now teachers, it might take a little time. आपका वीडियो का साइज कितना बड़ा है उसके हिसाब से वो टाइम लेगा, and then video export हो जाएगा according to the pace. Now I think this might take a little more time because video थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है. Okay, it is of 4 or 5 minutes, so it will take time according to the size of your video. I'll just cancel it, and I'll tell you what is the use of you saving the project. Now teachers, if you have exported it and आपको end में बस एक video मिलता है like this, okay? Now if you show it to someone and they say no I want to make that changes, अब अगर आपने फाइल सेव नहीं की है तो आपको जो हमने अभी पूरा किया है आपको वो सारी चीजें रिपीट से फिर से करनी होंगी, okay? Because this is just a normal video, this one is just a normal video. आप इसमें कोई भी तरह का एडिटिंग नहीं कर सकते हो, ओके? सो आपने जो भी वीडियो बनाया है आपको फिर से बनाना पड़ेगा. But if you have saved it and someone says make changes here and here, you can see this image of the OpenShot and there is a trial video. आप इस पे क्लिक करोगे and you will be immediately transferred to the interface of your trial video and everything that it had, like this.
Just give it a second and let me just drag it. आपको आपके सारे फाइल्स इसी तरह से यहाँ पर मिलेंगे. सो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको सारी चीज़ें फिर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो सारी चीज़ें यहाँ पर है. आपको बस जो चेंजेस करने हैं आप यहाँ से कर सकते हो. अगेन क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन सेव प्रोजेक्ट. वो चेंजेस भी आप सेव कर लीजिए एंड देन अगेन यू कैन एक्सपोर्ट द प्रोजेक्ट with, or sorry, export the video with the new changes that you have made. So whenever you are making a video, this is a very useful option. You can save it. So in future अगर आपको सेम वीडियो में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली उसके फाइल में जा सकते हो जो आपने प्रोजेक्ट सेव किया है एंड देन यू कैन मेक द चेंजेस बिकॉज आपके लिए ये सारी स्लाइड, सारी वीडियोस, images, all the transition, everything will be kept here as it is. So teachers, I guess this was all. Any other questions you all have, teachers? Any other questions that you would like to ask? Okay, I think everyone has understood. So Thank you, Shumaila ma'am. Gagan ma'am, I request you to give vote of thanks. Gagan ma'am, I request you to give the vote of thanks. To Shumaila ma'am. No, Yes, ma'am. Hello, good evening, everyone. Shumaila ma'am, thank you so much for such a wonderful session. So we are looking forward for the next session. So hope we will try your all what you have taught us. So we'll try in our videos. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, teachers, because I know some of you already know this very well. Thank you, Sandeep sir. Thank you, everyone, for attending the session. Shumaila ma'am, when you will give the assignment or when they have to submit that assignment? Yes, sir. I'm going to say that now. Teachers, again, after the class is over, I'll be uploading this on the YouTube. I'll share the link and also I'll share the assignment. The assignment is you have to take few videos and pictures and you have to download OpenShot first. आप सबको सबसे पहले OpenShot download करना होगा and then in OpenShot, whatever thing that I have done here, you have to trim it. आपको उस पर ट्रांजिशन ऐड करना है, आपको वीडियो पर ट्रांजिशन ऐड करना है, आपको इमेज पर ट्रांजिशन ऐड करना है, आपको एक वीडियो को थोड़ा सा स्लो करना है, आपको एक वीडियो को थोड़ा फास्ट करना है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन दैट यू ऑल वांटेड इज आई वुड लाइक टू सी 4 videos on the same screen. That is the important part of the assignment. 4 videos on the same screen. The background voice should be different. If you want, आप ऊपर के चारों videos का background voice remove कर सकते हो and just a single background voice I would like in the for the entire video and just a title and the beginning, a title slide in the beginning. Same assignment, I will write it and also forward it to you in the WhatsApp group. And teachers, the due date is Sunday or before Monday morning. You can forward these all the entire video to me. Okay, teachers? सुमैला मैम बहुत ज्यादा होमवर्क दिया आपने. So ma'am, do one thing. मैं वो लिस्ट में आपको जो जो होता है ना आप वो लिखिए और उस पर टिक भी करिए. If any one of you has any problem with any feature in the next meeting, you can just ask me and I'll show you that feature again. You can do that also. So I hope teachers you Jyoti have ma'am, she is telling you to try it out. कंपल्सन नहीं है, कुछ चीजें नहीं होगी, कुछ चीजें होगी, बट ट्राई करने से कुछ तो मिलेगा ना मैम आउटपुट. दैट शी इज टेलिंग यू. वो तो है सर, वो आप वो सही राइट बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा होमवर्क देंगे तो अच्छा है हमारे लिए. एक ओके मैम, आप जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए. जितना नहीं आता है उतना फिर से सिखा देंगे मैम. Yes, या फिर thank you. video will be there on the YouTube, so you can see that video. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, Sumana ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, teachers, for attending the meeting. Thank you so much. Thank you, Sumana ma'am.